they are able to see it. Please simply raise your hand if we are clear and if you're not going too fast, or you can just, kind of comment in case we are going very fast. So that means we are clear. So now what happens is there are two links. One is exam registration and the second one is student registration. If you look at this area, this is blank. That means we have not registered for any exam. Now what I need to do is I need to register for all the exams, that is all the English exams, all the maths exams and all the science exams. So let's start with English. This year, let's go to class 8th, English class 8th exam. I need to put in the principal's number, which can be just P for your information. I'm going to type in my phone number only, 47207. I'm going to put in one coordinator's number because there are so many exams. No, we may have multiple coordinators. So the coordinator for English, I'm going to put English coordinator 1. And I'm going to put in the phone number for that coordinator. Same number I'll take for the demo purposes. And second coordinator needs to be the second person, not the same person. And this is in case the person is absent or in case the mobile is not working or you're not receiving SMSs. Please put in 3 different mobiles so that you get all the messages from us. And number of computers. This is very, very important because what happens is if I say 20 computers I have in my school, the slot taking cannot be more than 20. You cannot apply for 23 students to take exam during 9 to 10 session. So if I say I have 40 computers which I will be using in one slot, I can register 39 to 40 computers during this time. We'll repeat this once again towards the end, and I simply register the exam. So now if I go to the exam registration, we refresh this, Control R, and I refresh the screen. It shows me the English exam. It shows me the principal's phone number. It shows me the English coordinator 1's number. It shows me English coordinator 2's number. And it shows me 0 registered students and number of computers. And the status is true. Please ensure that your status is true. Now, what do you mean by registered students? Prakash, can you just read out the QAs also that are coming in from time to time? Yeah, sure. Yeah. We'll do that. Yeah, so that we can answer there and then. Now, Definitely. number of students, as in when we start adding registered students, this number will be auto-counted by the software. So in case if I look at this exam, pop in the English 8th class here. See, I don't have any students here. So what I need to do is I need to register students for this particular exam. Right? So how do I do that? I'm sorry because people have got my number and they are kind of using me as a support number. So what I need to do is I need to go to student registration and I need to register for this exam. Now, if you look at this screen, only class 8th and English is showcasing. It's not showcasing maths. It's not showcasing science. Why? Because if you go back to examination registration, we have not registered for mathematics and we have not registered for science as yet. So I'm going to now register for class 9 mathematics. I'm going to take the class 9 mathematics. I'm going to use the P number, which is again the same principal's number because I'm from the same school. Now my coordinator might change here. So I'll say maths coordinator 1 because this teacher has changed. The number again would change. I would say maths coordinator 2, another person, another member of the faculty, and the number. And computers are still the same. So for one school, we are saying we'll only allow you to use 40 computers. And I say register. Now, if I refresh the screen, I go back to exam registration. How many exams do I see? We see 2 exams. But we have still not registered any students. This auto count is still 0. If you see in both the cases, the auto count is still 0. So one thing is, please ensure that your
you register for all the exams. The first problem that comes to us towards the end is that the school has registered for only one exam and they forgot about the rest. The second problem that comes to us is that the schools have forgotten to register the students even though they have just registered for the exam. If your count is 0, that means you have not registered your students. So your students will not be able to give the exam. So now we have 2 exams, English 8 and Mathematics 9. Now let's go and register our students. Now, if you look at the drop down, I have 2 classes now. English, if I go to 9th, I have Mathematics. Again, I'm repeating. If I go to 8th, it is English. If I'm going to 9th, I have Maths because I have registered 2 exams. So for the students also, the same drop down is coming. Now, here when it comes to student registration, now I'm going to do it for Mathematics. I'm going to say name, that is AA. Last name is maybe BB. Father's name is FF and mother's name is MM. Student photograph is not mandatory. I repeat, student photograph is not mandatory. And I say register. Now, if you look at this, my one student with an ID has come in. The password has been generated for Mathematics 9. Now, let's go back to exam registration. It is showing me a count of 1. Are we clear? Anyone who's not clear or anyone who's not clear or want me to repeat this, we can repeat the same thing with the English now. So we are clear here, right? So first thing is we need to ensure that all the exams are registered, whichever exams are happening, science, maths, English. Please checklist, take a printout, just do a control P and take a printout. Make sure you've registered for all the exams. And after that, you please ensure that these students are also not at a number of 0. Okay. Now, this number of computer is also very, very important because the software, once the slot taking and time taking comes into loop, the software will not allow you to let more than 40 students sit at one go. So if you just sit 10 computers and you're wanting to have 40 students sit, please make sure that you have that many computers and that many students are able to sit, because it's going to divide the number of students with the number of computers and the number of days. Now let's go back to student registration. Now, some of the schools told us that, we have a lot of students. We know some of our schools have like 1,000 plus students coming in, 1,200 students, 1,400 students. So now registering one by one is not possible, right? I'm sorry, this is like, so you're registering one by one, the student is not possible. So what we've done is, we've given you a facility to import student data. You can simply see the sample file here. It's gone here. If I open this and I enable this, it's dropped all the exams. But if I try to fill up for Olympiad now, it will not save. Why? Because I have not registered for Olympiad 1 and Olympiad 2. So no matter what data I fill up here, if I fill up, let's say it's Ritu RR from Minerva, father's name is F, mother's name is M, and I try to save this with other data, it is only going to pick up data for English and Mathematics. Mathematics 9 and English 8. So what I'm going to do is, I'm going to import one file. We've already kept one file with us, student import data. But let me just go back and see on my desktop, just what does that file say? It has registered me for science and mathematics, English, but I have registered for maths. So what I'm going to do is, I'm going to remove one row. I'm going to save this. I'm going to go back to Zoom. Sorry. I'm going to go back to this thing, choose the file, take the student data and import. So what has happened? Automatically, even that student has come in.
and there is no need to add the photograph. So now we'll take a couple of questions and then maybe we can repeat once again. Yeah, Ritu, there's a Kanchan who's requesting how to download that Excel sheet Okay, so format. Kanchan, what you will do is you go to the registration, student registration form, go to import student from Excel. Once Download again, the I'm repeating, registration, student registration, import student registration, and there's a sample file here, Kanchan. But Kanchan, first make sure that you have registered for all these exams. This year we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exams. Right? So make sure first to register these, then you download, and by one you can just add a row to this. Let me enable this for editing. So just insert a row into this and just keep adding student after student after student and just upload in one go. And then my suggestion to you is do take a printout of this and checklist with all the students' data that you have, because we have schools coming in and telling us, oh, ma'am, we needed to register 20 students and we could only do 10. We forgot about 10. Or we missed out 2, or we missed out 4, because we understand that this is a lot of logistics are involved in this, Okay, any other QAs? Because I'll stop sharing my data and maybe we can have question answer session for some time and then maybe again repeat. So Prakash, you can just stop my sharing and I can... Yeah, and there's one more question. The father and mother name is it mandatory? It is mandatory because sometimes you have the same name student in the class. There can be, there can be like we have Rajat Sehgal. There can be 2 Rajat Sehgals in class 8A. So we do differentiate from the mother and father. So that is mandatory, but the photograph is not mandatory. Any other questions? Guys, please feel free to ask as many questions as you want. Any other questions that we have? Any, we can unmute you and you can ask a question so that is for everyone. Yes, I mean, there is 2-3 questions. I think Natasha is answering. So maybe if you can raise your hand, we'll unmute you so that that question can be asked and everyone is aware of it and we can answer it also. Okay, there is a DAV Jaitu. Shall I unmute them? 1 second. Yeah, please. Hi, Jaitu. You can unmute yourself and ask the question. Yeah. Hi, Anudatta. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो आपका क्वेश्चन. ऋषि लूप में है क्या? Yes, ma'am. Yes. अनुजी अनम्यूट कर लिया. हाँ जी. Anudatta, please पूछिए. Everything is clear. You have explained it very nicely, ma'am. Okay. Any question? Any other question? Genuine question, jo sab, which is feasible for everyone. Please feel free to ask, because the more questions you'll ask, the more help we'll be able to provide to our schools. Yeah. कुलदीप जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. कुलदीप कुमार विश्वकर्मा जी. Okay. There is one more Mandira जी पूछ रही है कि please show us how to add the Excel file for more than one student. Let me share the data again. I'm going to share my file again and again show you the registration of more than one student, right? So ऋतु आपने स्क्रीन बंद कर दिया. स्क्रीन शेयर कर लो. I'm just sharing it. I'm just sharing it. Sure. Okay. So what I'm going to do is I will once again, I'm going to share how do we do the... Now what has happened is I've gone to the exam registration.
I have registered for 2 exams, mathematics 9th and English 8th. So I can only register students for mathematics 8th and English 9th. So what I'm going to do is I'll go to examination registration page. Sorry, I'll go to student registration page. I'll go to import student. Can you see this, guys? This blue button. Go to import student page. Download the sample file. Enable this editing bit. Now, I have registered for, now let me see again. I've forgotten. So what have I registered for? I have registered for English, this one, and my class math. So these 2 I've not registered for. I'm going to delete these. I've not registered for this, and maybe I've not registered for these 3. So I have 2 or 3 students for English, and I have 2, 3 students for mathematics also. So what I'm going to do is, the name is same, A, and Excuse me, ma'am. Yes. मैम आपकी स्क्रीन एक ही जगह पे स्टॉप हो गई है. Ash, can you see my screen? फ्रीज कर गई है मैम. Yes. Has it stopped? Can you stop this sharing and do it again? Okay, let's start again. Let's share the screen again. Let's share it again. Can you see it? Yeah, Excel. What I've done is, now in the last name, I put the L. Now, there was a question that, why is this father's name and mother's name mandatory? Now, in this case, it could be F and M for mother. In this case, it could be H and say K in this scenario, and S and V in this scenario. Now, if you look at these 4 things, now this student becomes unique. So mathematics also we take, now we have the same data for same student is taking, now let's say we have DD, 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 A, and we have R. And if you have 2 students by same name, maybe they're twins or whatever for some reason, please put 1 and 2 against them. So now, Mandira, this is how we, I'm going to go save this file, save it, browse, add to my desktop as a test file or whatever file, save it as an Excel file. Okay. And then simply go and say, choose file and upload the test file. Are we clear? So I've simply done import Excel. See the number of students that have come in. Are we clear? Again, it stopped, I think. Prakash, did my screen stop again? Now the screen sharing is gone. Yeah, I've just stopped sharing. So was this clear, Mandira? Did we all get to see this? Yes, clear. Okay. So now a couple of questions. Rishi, are you in the loop? Yes, ma'am. Natasha, please ask Rishi to explain about the section also जो update आ रहा है. एक update बता. Okay, ma'am. हेलो गुड आफ्टरनून ऑल. एक्चुअली हमारे पास बहुत क्वायरीज आ रही थी जो जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे 800-900 स्टूडेंट्स अपलोड करने के लिए. तो बाद में जब उनको अपने रेक्टिफाई करने रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको मुश्किल हो जाता है. जैसे अगर सेम नेम से ऋषि ठाकुर नाम से आपका एक ही सेक्शन में 2 स्टूडेंट्स हैं या आपके एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको फिल्टर करने में इश्यू होता था कि किस तरीके से उनको वो रेक्टिफाई कर पाए कि कौन सा स्टूडेंट कौन से सेक्शन पे है. तो हमने 2 वहाँ पे एक आपको कैपेबिलिटीज दे दी है करने के लिए कि आप क्लास एंड सेक्शन भी इसमें अपलोड कर सकते हैं.
इसमें जो रितु मैम अभी आपको दिखा रहे थे फॉर्मेट एक्सेल का, इसमें दो अलग से ऑप्शन आ जाएगी, क्लास एंड सेक्शन। अगर आप उसको अपने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके हैं तो आप उसमें अपने क्लास एंड सेक्शन भी अपलोड कर सकते हो, जो आपको फिल्टर करने में आपको बाद में हेल्प आउट करेगा। सो व्हाट ऋषि इज सेइंग इज कि हम फ्रंट एंड में नहीं दिखाएंगे सेक्शन। जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं वो तो अपने 10-12 स्कूल्स फ्रंट से ही अपलोड कर दीजिए। लेकिन अगर आपके बहुत बिग लिस्ट है, यू हैव 500 स्टूडेंट्स, 800 स्टूडेंट्स, तो आप एक्सेल में उनका सेक्शन, अभी एक अपडेट जा रहा है ऑनलाइन, उस एक्सेल को ड्रॉप करके सेक्शन भी आपको उसमें टू मोर कॉलम्स विल कम इन, दैट विल हैव सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन आल्सो। सो वो अपडेट भी हम ऐसा करेंगे। हम यूट्यूब पे इसको टाइम टू टाइम, यूट्यूब पे हम छोटी छोटी वीडियोस डाल रहे हैं, जो शायद प्रकाश आप शेयर कर सकते हो। कैन यू जस्ट शेयर दोज यूट्यूब पे वट एवर वीडियोज वी आर अपलोडिंग? Yes, I'm sharing the links for. हाँ, वी विल बी शेयरिंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन ऑल्सो। और जो अपडेट आएगा वो भी हम यहाँ रिकॉर्ड करके आपके एक ईमेल पे भी शूट कर देंगे कि अपडेट चला गया है ओलंपियाड का। So Prakash, can you just show them the videos also? Yes. Especially like how to register, that small video was there, so we keep uploading whatever help we can put up on the YouTube. यस मैम, एंड वहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं ना, एक अलंकार गोस्वामी ने बोला है कि फादर एंड मदर नेम इज मैंडेटरी, तो वो मैंडेटरी रहेगा क्योंकि उस वो सर्टिफिकेट के लिए भी जरूरी रहता है। जब आपका कोई स्टूडेंट सर्टिफिकेट बाद में मार्क्स होते हैं तो वहाँ पे फादर एंड मदर नेम वहाँ पे रहता है सर्टिफिकेट के लिए। एंड मैम किसी ने बोला प्लीज रिपीट एक्सेल शीट हाउ टू जनरेट, ये तो आई थिंक हमने कर दिया है। हमने अभी रिपीट किया है ना। We'll So share the अब recorded what session. you can do is, see, हमने एक यहाँ वीडियो डाला है, how to register join webinar by Minerva. Last time a lot of people were having problem कि हम webinar कैसे join करें, तो वो भी हमने वीडियो यहाँ बना के डाल दिया है। So अभी ओलंपियाड का जितना भी अपडेट्स आएगा, as and when the questions come from school, we'll compile those questions and we'll upload them on the website, because there is a possibility कि हर स्कूल से 3-4 coordinators हों, because lot of exams are happening. राइट मैम। स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे। So because हमें for us to get in touch with teachers is difficult, because आप लोगों का classes होता है, we don't want to disturb you. So time to time we'll update and we'll try and send messages through ROs or through principals or through that community that this update is now there. So you can just see it जब भी आप comfortable हो, 5-10 minutes का video देख के ना, just have a look. Still, if you have questions, so एक email डाल दो प्रकाश, हमारा जो help desk का email, if you can just type it here. Yeah, sure. Please note down our one email. This comes to a lot of us in Minerva. So अगर आपका कोई फोन नहीं भी लग रहा during Olympiad or you're having some problem, just shoot a email ID here with your mobile number so that we can call you back immediately. So if you look at this, Prakash, can you just highlight this email ID? In the chat window I uploaded हाँ, it. चैट में डाल दिया, आप ये ईमेल आईडी ले लीजिए अगर किसी का फोन नंबर नहीं भी लगता। Any other questions that are there? यस मैम, वहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट प्रोसेस क्या रहता है। आई मीन डज ऑल द स्टूडेंट रिसीव सर्टिफिकेट और ओनली द विनर्स? ऋषि, ये आप एक्सप्लेन करो। यस मैम, ये जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं जो आई थिंक 80% से ऊपर रहते हैं वो डायरेक्टली डीएवी देता है, एंड जो उससे नीचे के परसेंटेज रहता है वो आप डाउनलोड कर सकते हो सेम वेबसाइट से, जहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हो वहीं पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपके And- मेरिट वाले जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो प्रिंट होकर आते हैं स्कूल में। Yes, और ma'am. बाकी आप डाउनलोड करके आप अपने प्रिंटर से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बना के स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। लाइक सम स्कूल्स आर डूइंग इट ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर सा प्रिंटिंग करवाते हैं जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, एंड देन दे गिव इट टू स्टूडेंट्स। सो अ स्टूडेंट फील्स गुड अगर आप उसको A4 साइज सिंपल ना करके किसी प्रिंटर से बनवा लें वो सर्टिफिकेट, सो दैट इज गुड फॉर स्टूडेंट्स आल्सो। यस मैम, तो वो एंड सिस्टम में रहेंगे वो सर्टिफिकेट्स आपके। वन मोर क्वेश्चन मैम कि इफ वी आर गोइंग टू एंटर मैथ एंड साइंस एग्जाम डिटेल, हाउ टू इम्पोर्ट दैट इन पर्टिकुलर एग्जाम, काइंडली आंसर मैम। ये अंजलि मैम ने पूछा है। तो ये कह रहे हैं कि एक ही शीट में अगर दो एग्जाम का वो एक स्टूडेंट का डाल रहे हैं तो अपलोड कैसे करना है? तो वो तो सिंपली आपने अपलोड करना है, वो तो सिंपली जैसे मैम तो ने बताया। जैसे मैंने मैम अभी दिखाया ना आपको, इंग्लिश और मैथ्स लिया, वैसे आप साइंस भी सेम शीट में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम में भी ले सकते हैं और आप, हाँ बिल्कुल।
और आप मल्टीपल टाइम्स भी, लेट्स से आपके स्टूडेंट्स बाद में आए, 100 स्टूडेंट्स बाद में आए, आप एक और शीट को अपलोड कर दीजिए, दैट विल जस्ट गेट एडेड टू द डेटा। बट आपने डुप्लीकेट शीट्स नहीं अपलोड करनी है, जैसे जो आपने पहले शीट अपलोड कर चुके हो उसको दोबारा से आपने वहां पे अपलोड नहीं करना है। एक दैट कुछ माइट क्रिएट डूज एंड प्रॉब्लम। डोंट्स बता दो ऋषि, जो आप लोगों के पास हाँ, लास्ट ईयर जो आपका जैसे कोई आप शीट अपलोड कर चुके हो ऑलरेडी, उसको री अपलोड नहीं करना है आपने, अदरवाइज वो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वहां पे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। अगर आपका कहीं भी प्रॉब्लम आता है, आपने अपलोड किया है एंड देयर इज एन इश्यू, प्लीज गेट बैक टू अस, हम आपका क्लीन अप कर देंगे डेटा। हाँ, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पूछ रहे हैं मैम, तो आप डीवीसीए की वेबसाइट्स पे ना हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपके Can we just Prakash, can you just go to the DAVCAE website again, because most of the data is on DAVCAE, क्योंकि हम अपडेट करते रहेंगे वहां पर। davcae.net.in। डीएवी CAE CAE .net। CAE.net.in। Just go to the Olympiad there. ओलंपिया टैब। The second last, top, second last, ओके the below that, yeah. So see that there are already there are numbers here. So please kindly get in touch with people, you know. So ऋषि का खुद का नंबर यहाँ पर है, so आप यहाँ से easily call करके you can ask questions, and if you still feel the phone is busy because exam time होगा, a lot of calls will be coming, just drop a message on their number, or you can drop a message on helpline, because we are going to monitor helpline 24/7. एंड मैम आई थिंक वन मोर क्वेश्चन, तुम्पा दे ने एक पूछा है, काइंडली टेल वंस मोर टाइम मैम, इज फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट मैंडेटरी? No, student photograph is not mandatory. ये pandemic में जब आप लोग when you were doing work from home, that time we had made it mandatory. Now the exam is going to happen from school lab, so photographs are not mandatory. एंड कंप्यूटर रिक्वायर इंटरनेट एक्सेस, ये भी पूछा है मैम वहाँ पे किसी ने। Yes, computer does require internet access because the exam is going to be on the cloud. And secondly, we are going to have one more technical session with the people who will be managing your lab. So if you want, you can join in again, but that will be basically to set up the computers for the exam. Any other question? आई थिंक ये आपने पहले बोल चुके हो कि उन्होंने बोला कि प्लीज वंस मोर एक्सप्लेन द प्रोसेस, वो आपका Ma'am, एक कुछ we'll base be पे- recording this session and we'll be uploading onto the YouTube this thing. So you can just at your convenience just go through it once again and just see it repeatedly how I've done that. Up once again, I think Prakash, if you can just put there, how do we find us YouTube channels? So just put that. I think it's Minerva Info. I shared the links in the chat window, Ritu, so Okay. that I'm doing it. Yes, please ask Surinder Kumar ji. Please पूछिए question. आप प्रकाश सर इनको अनम्यूट कर दीजिए, सुरेंद्र कुमार जी को। One second. अंजलि मैम, आपके सभी सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, बट प्लीज डू नॉट ऐड लाइक मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर. द नेम ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी एज पर, जैसे वो ड्रॉप हुआ था ना आपके एक्सेल फाइल में, वो एग्जाम नेम था, तो वही नेम रहना चाहिए, उसके आगे यू कैन पुट इन द स्टूडेंट्स वन आफ्टर द अदर. So this Minerva Info EdTech is the place where we are uploading everything that is relevant to our head office and our schools. That is how do you do new website design. Now Olympiad questions and videos will start uploading so that you don't even have to ask us. All the stuff related to Olympiad would be available here. Surinder ji, please ask your question. What question you have? हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, sir. सब बताइए. हाँ जी मैम, जैसे जब हम स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, हाँ जी. उसमें जैसे हम स्टूडेंट का फर्स्ट नेम डालते हैं, अगर हम इंडिविजुअली अगर एंट्री डालते हैं तो उसमें जैसे फर्स्ट नेम डाल दिया हमने, जब लास्ट नेम डालते हैं कईयों का सरनेम नहीं होता, तो वहां पे वो जो है हमें या तो वहां पे डॉट लगा के हमें ऐड करना पड़ता है नेम उनका, स्टूडेंट का। यस सर, अभी आप डॉट लगा सकते हो, बट अगर ये हमारे पास ज्यादा क्वेरीज आती है इस चीज के लिए, तो हम उसको मैंडेटरी फील्ड से हटा सकते हैं आने वाले टाइम में फिर।
सर अभी डॉट अच्छा लगा मतलब दीजिएगा, अगर बहुत सारी डॉट्स आई ना इस साल, हम देख लेंगे इसको, तो हम उसको मैंडेटरी अच्छा, हटा देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि हम पहले भी ऐसे ही करते हैं ना, करते थे लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था। मान लो किसी का सरनेम नहीं है तो वहां पे वो सेव नहीं होता है नेम, जब सर डॉट लगाते हैं तो फिर वो आप सेव हो डॉट जाता है। लगा दीजिए, हमने नोट कर लिया, वील हाँ आल्सो जी, टेस्ट इट आउट एट आवर एंड। हाँ जी, हाँ जी। हम भी टेस्ट कर सेकंड लेंगे। क्वेश्चन मेरा ये, हाँ जी, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे जब इनका एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम चलता है, हाँ उस जी। टाइम पे हमें काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। जैसे हमारी नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉग आउट हो जाता है वहां से, उनका जो लॉगिन होता है स्टूडेंट्स का। नहीं सर, इस अगर चीज वो में मैम, इस चीज का मैम इनको आंसर कर देते हैं। एक्चुअली इस बार हाँ हम जी, सर अभी एक और मीटिंग रखेंगे और वेबिनार भी रखेंगे। एक हाँ हम जी, प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करेंगे एग्जाम एग्जाम लेने का। इस बार हम सिर्फ एक हाँ जी, ब्राउजर होता है, उसको आपके जो टेक्निकल टीम होगे, आप होंगे या कोई और होंगे, हम उनको सभी को हाँ जी, एक हाँ जी, बता देंगे, एक यूट्यूब पे वीडियो भी डालेंगे और आपको मैनुअल भी दे देंगे कि किस तरीके से करना है। उससे क्या होगा कि जो आपके बच्चे हैं, कई बार क्या होता है वो बैक हाँ बटन जी, कर देते हैं, कुछ हो जाता, रिफ्रेश कर सकते हैं, उससे वो लॉग आउट हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि आप वो बच्चा सिर्फ एग्जाम दे पाएगा, वो कहीं पे भी क्लिक कर वहाँ पे होगा नहीं, ना बैक बटन होगा ना रिफ्रेश बटन होगा, जिससे कि बहुत सारी चीजें अच्छा, आपकी एरर्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे वहां से। सर व्हाट ऋषि अच्छा, इज अच्छा, सेइंग इज कि अभी तक ना हम डिपेंडेंट ब्राउजर के ऊपर थे, तो आप जब ब्राउजर क्रोम यूज करते थे ना, तो कई हाँ बारी जी, हाँ जी, मतलब रिफ्रेश का बटन उसने दबा दिया या उसको कंट्रोल एफ कर दिया है ना, करते करते, तो हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता था, तो वो आपको लॉग आउट करता था स्टूडेंट को। इवन तो हम वो लिखते हैं सबसे पहले कि रिफ्रेश नहीं करना, बैक बटन नहीं दबाना, हाँ राइट? जी, बच्चे तो बच्चे हैं, हाँ छोटे जी, हाँ जी, बच्चे हैं, सो दे यूज्ड टू डू दैट। ठीक, लेकिन उसको केटर करने के लिए हम एक ब्राउजर डाउनलोड करवाएंगे सभी लैब्स में। वो आपके लैब जो लैब असिस्टेंट्स हैं वो हेल्प करेंगे हमें, और उससे आपकी अब जैसे, हाँ जी, 9% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कई बार हमारा जो, जैसे वहाँ पे लॉगिन स्लॉट्स होते हैं, जो जैसे हमारा लॉगिन स्लॉट हम सेलेक्ट कर ले, जैसे 10 से 11 बजे तक हम स्लॉट बना लेते हैं उसमें, हाँ तो जी कई बार जो है वो स्लॉट में लॉगिन ही नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो है वो टाइम लेट हो जाता है। नेक्स्ट जो लॉट हमने, मान लो नेक्स्ट 11 से 12 बजे का नेक्स्ट होता है, सर, वो और लेट हो कोशिश जाता है। कोशिश करके ना अभी आपके रजिस्ट्रेशंस टाइमली कर लीजिए, ताकि हम जब हाँ स्लॉट्स जी, हाँ दें, जी, बी द फर्स्ट वन टू टेक इट, है ना? जैसे वो जो ओके, आपका सुबह ओके, 9 to 10 वाला होता है, दैट हाँ टाइम यू जी, हाँ जी, टेक इट। होता है क्या, सारे 9 to 10 वाले 10 o'clock के 2 मिनट पहले लॉग इन करते हैं, ठीक है? और 11 वाले हाँ भी आ जी, जाते हैं, तो जब आप 50 मिनट्स आपने डिले कर दिया अपने स्लॉट में, और नेक्स्ट स्लॉट भी आ गया, सो ऑब्वियसली वो हम ट्रैफिक को ईज अप करने के लिए ना पीछे से ब्लॉक करते हैं एट टाइम्स, क्योंकि ओके, ओके, नहीं स्कूल्स अपना, मतलब कि वो हाँ, फर्स्ट टाइम, स्कूल्स अपना टाइम नहीं ना डर करते। हम बोलते हैं 9 to 10, तो 9:10 तक आप आ जाइए अंदर, बट वो 9:50 तक भी आते हैं बहुत स्टूडेंट्स। बट वी कांट स्टॉप, क्योंकि ये तो हमारा इंटरनल एग्जाम है ना डीएवीज का, तो हमें तो सभी हाँ स्टूडेंट्स को जी, देना ही है, पार्ट करना है। बट उसमें हम थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन रखेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जो हमने ये वेबिनार्स वगैरह किए हैं ना, इसीलिए कि हाँ हम जी, एज अ कम्युनिटी हमें एग्जाम कंडक्ट करना है। इट्स नॉट कि हम कहीं अब बैठे हैं, आप लोग कहीं हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप हमें बताइए, सो वील ट्राई एंड रिजॉल्व इट। ओके, ओके मैम, तो ये भी ओके, हम थैंक यू मैम। कोशिश करेंगे कि आप ना स्लॉट 9 to 10 ले लीजिए। डोंट ट्राई ऑल योर स्लॉट्स बिटवीन 10 to 11, वो सबसे ज्यादा टफ टाइम होता है डे का। टेन ओके, टू ओके, इलेवन एंड आई थिंक थैंक यू, 11 to 12। ओके, यस मैम। तो आगे पीछे थैंक यू, इज्जत करिए आप अपने स्टूडेंट्स को ना, तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा उस टाइम। एनी अदर ओके, थैंक यू मैम। क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं मैम, थैंक यू। किसी और का है? चिपरा चोपड़ा। एक मिनट मैम, सर्टिफिकेट्स आपके सेम डे, अलंकार गोस्वामी, आपके सर सेम डे आपके मेडल्स सर्टिफिकेट सिस्टम में आ जाते हैं। The minute the exam is over, you can download your certificates. Only the merit students certificates takes time, क्योंकि वो यहाँ पर प्रिंट होकर डायरेक्टर्स के और प्रधान जी के सिग्नेचर के बाद जाते हैं। मॉक टेस्ट, हाँ, हम 2 दिन के लिए मॉक टेस्ट कर देंगे मैम, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। गीता जी का क्वेश्चन है कि विल देयर बी अ मॉक टेस्ट? इफ यू वांट वी कैन डू इट, वी कैन गिव यू 2 days for mock test. How the exam will be conducted, time slot will be given for each subject. Yes, time slot will be given for each subject.
Once your registration is over around 15th of November, हम फिर से registrations खोलेंगे in which you will be taking the slots as well as the dates. Because depending on the number, if it is 70,000 or 90,000, we will set up the dates in December. और फिर हमारा फॉर्म आएगा, आपको जो वो डेट्स दिखाएगा और टाइम स्लॉट्स दिखाएगा. In case of Muhammad.xxx, what should be the first name? Neeraj ji, let me get back. If there is a dot, we'll ensure that the dot is also allowed in the system. So just put in Muhammad first name, and in the last name you put in the last name. Any other question? After registered 180 students, by chance, if I miss 10 students, can I add them later? Yes, ma'am, you can add as many times as you want, but same student को repeat मत करिएगा because हमने validation नहीं लगाया. Ritu can be added 5 times, 10 times also, because maybe the last name is different or the father mother name is different. So please ensure that repetition is not there. Any prize announced for the winner? Ma'am, ये मैं director ma'am से बात कर सकती हूँ DAV में this time, and whatever decisions DAV CAE director takes, तो वो फिर आपके पास DAV CAE से आ जाएगी information. Any other questions? Ma'am, this also I'll put on ma'am's table that I guess coordinators also should get certificates for the same. It's a good idea. And this again, we'll